जजमेंट्स कुछ लैंडमार्क जजमेंट है, इन्होंने बहुत सारी चीजों को सेटल कर दिया है. द लॉस हैज बीन सेटल्ड इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ दीज जजमेंट, which is known as landmark judgment and which has not been overruled also. तो जब ऐसे जजमेंट्स हैं जिन्होंने लॉ को सेटल कर दिया है, तो ऐसे जजमेंट को वाइडली यूज करो आप, rampantly यूज करो, नॉट ओनली while talking to the client but also while drafting, documenting, or doing the cases. My friend, these are the things which can really make you a real good medico legal consultant, and you will not lose them. And once you are known for giving a result, believe me, from across the country, people are going to call on you. Today, with all grace and blessings of Almighty, today I could able to provide that. That's the reason people are coming from every corner of the country to. And I want that same replica to become, so that people should search you. लोग आपके पास चल के आए, लोग आपको ढूंढ के आए, क्योंकि माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट इज द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट एंड योर रिजल्ट ओनली गोइंग टू स्पीक. साल लगेंगे माय फ्रेंड, 2 साल लगेंगे, कभी कभी किसी को 3 साल भी लग जाएंगे, लेकिन 3 साल एनफ है माय फ्रेंड अपने आप को इस डोमेन में स्टेबलाइज करने के. So with this background, let me give a little brief about some landmark judgment, just to make you understand the judgment and provoke you to read the judgment. My whole effort is not there to narrate every judgment, but my effort is to make you understand how judgments are important, so that you can start reading the judgments. You start reading and interpreting the judgment. You start reading, interpreting, and segregating the judgment with highlighted points so that you can utilize the same whenever opportunity. So let me give you few important landmark judgments background to make you understand the judgment. Only important part in judgment, when you read the judgment, always focus on facts of the case, which could be one paragraph, not more than that. Then, of course, the defense played by facts of the case means the complainant's allegation. Defense played by the doctor. In that judgment, another paragraph is going to be the part of defenses played by the doctor. Third paragraph could be the interpretation done by the courts, the judges, on the basis of all the document in hand. And fourth, important is the conclusion. ये चार चीजें अगर आपने अच्छे से पढ़ ली, नेशनली ऑर्डर उसके ऊपर ही बेस्ड है, तो यू कैन रियली अंडरस्टैंड द जज प्रॉपर वे. So let me give you idea about few judgments which has changed the whole scenario of medical practice in North, which can really can be bring a strength in you while discussing with the people. And these landmark judgments have started from Sathana's case long back, when the first time Consumer Protection Act came in this world or in a country, and doctor was brought under the purview of Consumer Code post 1986, that is around 1989 and 90. And Honorable Supreme Court has interpreted well in that and settled the law, saying that service definition is a elaborative definition. Services means it includes but does not limit other services. It includes insurance, includes builder, includes other people, but at the same time does not exclude other services. And by interpreting the law, the Honorable Supreme Court said that medical cases or medical treatment also comes under the purview of consumer fora. And that judgment has changed whole horizon of the country. And today in 2023 also, we are under Consumer Protection Act 2019. Post 2019, same issue was again cropped up because the medical services word was not there under the service definition. People thought that we do not come under the purview of this, but that was proven wrong because the old judgment, 1986 Act, 2019 Act, when it was interpreted, it was at the same footing
And today we are considered under these. I'm going to share all the judgment to you. And whenever you get opportunity, please read the judgment which I am sharing. So that was one of the landmark judgment in respect to the Consumer Protection Act, in respect to the service provider and service taker, and we become the part and parcel to that. Second judgment आया था, बहुत ही famous judgment, my friend, 1995. It was again a landmark judgment, which was highly been accepted, and after that, hue and cry has happened in a country, and whole medical practice has taken a 360-degree view, and that was a case of Poonam Verma. Yes, my friend, Poonam Verma versus Dr. Patel was one of the very famous case. 1995 का जजमेंट 2023 में आज भी कई कोर्ट में साइट होता है, और कई कोर्ट में ये जजमेंट ही केस के रिजल्ट्स बनते हैं। आज भी अक्रॉस द कंट्री इस जजमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर पाया है। आज भी इस कंट्री में ये जजमेंट कई केसेस मेडिकल नेग्लिजेंस के डिसाइड करता है, माय फ्रेंड। और ये केस था पूनम वर्मा का, जिसके अंदर द पेशेंट हैज अप्रोच डॉक्टर पटेल, who has done complete investigation, clinical examination, and found him to be suffering from malaria. सारे proper investigation, proper treatment करने के बाद admitted a patient to the hospital. Patient remained there, but during the treatment died. Patient के relative ने कंज्यूमर कोर्ट में केस किया। उसका एक ही ग्राउंड था, being a homeopath, he is not allowed to do modern medicine of practice. This is a case of Maharashtra, Mumbai, and he is not eligible to give allopathic medicine. And whatever treatment he has given was under the domain of allopathy. मतलब ये जो जजमेंट था, ये क्रॉस पैथी के लिए जजमेंट, क्रॉस पैथी का जजमेंट, वेरी वेरी फेमस जजमेंट। लोअर कोर्ट में डॉक्टर के फेवर में रिजल्ट गया, स्टेट कमीशन में डॉक्टर के फेवर में रिजल्ट गया, नेशनल कमीशन भी ऑलमोस्ट फेवर ही करके गया था, बिकॉज स्टैंडर्ड प्रोग्राम ट्रीटमेंट सभी देखते थे, स्टैंडर्ड प्रोसीजर देखते थे, चीजें प्रॉपरली की गई है वो देखते थे, एंड दैट रीजन everyone was giving a benefit to the doctor. And those time doctors were definitely being considered and a very important personality, and doctors को benefit बहुत मिली थी। तो in that domain डॉक्टरों को हमेशा ही बेनिफिट मिलने की वजह से केसेस डॉक्टर के फेवर में गए थे, बट दैट वाज नॉट अ एंड। व्हेन द मैटर हैज गॉन टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस आर डेफिनेटली टेकन बाय द कॉन्सल्स, एंड कॉन्सल ने अच्छी खासी रीडिंग किया, एंड रीडिंग करने के बाद कॉन्सल ने सीसीएच एक्ट में कहीं तो भी पढ़ा कि होम्योपैथिक डॉक्टर कैन गिव होम्योपैथिक मेडिसिन ओनली, द वर्ड वाज ओनली, एंड ही हैज साइटेड दैट पर्टिकुलर एक्ट। और आप सबको शायद मैं कई बार बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक्ट इज सुपीरियर इन दिस कंट्री। पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया है, नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने, दैट इज सुपीरियर एंड कोर्ट हैव टू, अनलेस इट इज अल्ट्रा वायरस। तो सुप्रीम कोर्ट भी होगा तो उसको एक्ट तो डेफिनेटली फॉलो करना है। एंड द सीसीएच एक्ट हैज सेड that homeopathic can practice homeopathic only on that word. Honorable Supreme Court has given a judgment saying that in spite of all the treatment properly given by the doctor, in spite of all standard protocol of practice and various aspects well followed by the doctor, since Act does not allow him to practice allopathy, we find deficiency in a practice. And court has gone a step ahead, saying that such a cross-pathy practice need to be curtailed, and such a practice will lead to a domain of a bogus doctor. मतलब एक स्टेप आगे जाके कोर्ट ने ये बोला कि भाई अगर क्रॉसपैथिक प्रैक्टिस करते हो तो यू विल नॉट बी अ रजिस्टर्ड डॉक्टर विद पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। अगर आप होम्योपैथी हो तो यू आर नॉट सपोज टू बी रजिस्टर्ड विद एलोपैथिक मेडिकल कॉन्सेप्ट। अगर आप आयुर्वेदिक हो, यू आर नॉट सपोज टू बी रजिस्टर्ड विद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉन्सेप्ट। तो अगर आप नहीं हो तो यू कैन नॉट प्रैक्टिस।
एंड उस जजमेंट के बाद बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ कंट्री में, बिकॉज आफ्टर दैट जजमेंट द क्रॉस पैथी प्रैक्टिस एब्सोल्युटली बिन सीज्ड इन दिस कंट्री, क्योंकि जजमेंट का इम्पैक्ट तो कंट्री पे सभी में पड़ेगा। एंड फिर वो जजमेंट के बाद आयुर्वेदिक वाले भी इम्पैक्ट हुए थे, एंड दे हैव बीन टू multiple courts. They have been to the government in the state of Maharashtra because this was impacted. And to support them, Maharashtra state has amended their act in 2014. Prior to that, they brought notification allowing them to practice modern medicine of practice. In Maharashtra, the Act of Maharashtra Medical Practitioner Act has been amended in 2014 and allowed BMS, BUMS doctor registered with MCIM in Schedule A, A1, BD are allowed to do modern medicine of practice. Homeopathic के लिए, yes, that was issue. In 2014, again, the Maharashtra government has brought a notification bringing pharmacology course for homeopathic doctor to MUHS and said that whoever has done this course and got registered under medical council will be allowed to practice modern medicine to limited extent. लेकिन आज भी across the country, when I say that whichever state has not allowed BMS doctor, BHMS doctor, or any other practice are still being blocked. Now, question will come: can allopathic doctor prescribe homeopathic drug or Ayurvedic drug? Answer to that is again under the law that no, because that also comes under the cross-pathy practice. Cross-pathy means one pathy doctor cannot prescribe other pathy doctor. And in such a cases, criminal action must be initiated for the domain. और उसके बाद my friend country के अंदर बहुत सारे cases decide हुए हैं जो होम्योपैथिक डॉक्टर के अगेंस्ट में गए हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर के अगेंस्ट में गए हैं, या किसी किसी जगह पे आयुर्वेदिक ड्रग प्रिस्क्राइब किए तो मॉडर्न मेडिसिन ऑफ डॉक्टर के अगेंस्ट में गए हुए हैं, जो ये जजमेंट साइड करने की वजह से रिजल्ट एकदम डिफरेंट आ चुका है। तो अगर आपका अपोनेंट एडवोकेट, आप डॉक्टर की तरफ से हो, अपोनेंट एडवोकेट ये जजमेंट साइड करता है, तो फिर नेचुरली वुड हैव टू फॉलो दैट। अगर अपोनेंट एडवोकेट को जजमेंट ही नहीं पता है, तो यू आर experience at that time, because ultimately judges are supposed to know all the judgment, but you can't expect because everyone is human being. यही चीज अगर आप क्लाइंट की तरफ से पेशेंट है और आप साइड कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट्स अ विनिंग केस इन अ केस ऑफ क्रॉस पैथ। दैट जजमेंट हैज गॉट गुड फुटिंग टुडे आल्सो आफ्टर 1995. टुडे वी आर इन 2020. This judgment still holds good in this country for winning any types of cases when I talk about medical per se. जर्नी आगे जब बढ़ी तो नेचुरली कई जजमेंट्स आए, छोटे जजमेंट्स, बड़े जजमेंट्स, बहुत लेकिन लैंडमार्क नहीं थे, लेकिन वॉज इन फेयर ऑफ अ डॉक्टर। मैं वो सब साइट नहीं करता हूँ बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ जजमेंट्स हैं, हर जजमेंट तो मैं साइट नहीं कर सकता, बट आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द फ्यू जजमेंट व्हिच हैज ट्रांसफॉर्म्ड द कंट्री ऑल टुगेदर व्हेन आई टॉक मेडिकल प्रैक्टिस इन दिस कंट्री। मुख्तार चंद का जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया था, जिसका बेस लेके कई कोर्ट के केसेस क्रॉस पैथी वालों ने लड़ा, कई फेवरेबल रिजल्ट्स आए। 2005 के अंदर वन अनदर जजमेंट delivered by Honorable Supreme Court. It was again a landmark judgment, and today in 2023, post 18 to 20 years, holding good for my doctor. And one of the beautiful judgment, I have cited this judgment almost in majority of cases in my career, not only cited in the court, but also counseled our client on the basis of this judgment. And this you need to read, because this is one of the beautiful judgment ever delivered in this country by Honorable Apex Court, where first time doctor was protected from criminal liability. Yes, सबसे बड़ा liability डॉक्टर के ऊपर रहता है क्राइम का, सबसे बड़ा डर रहता है उसको पुलिस स्टेशन का, सबसे बड़ा डर रहता है उसको अरेस्ट का, सबसे बड़ा डर रहता है उसको पुलिस स्टेशन में बिठा के रखने का। एंड दीज आर द फियर व्हिच यू कैन रिमूव ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट, वन ऑफ द ब्यूटीफुल जजमेंट माय फ्रेंड व्हिच you must know. And this was a case of Jacob Matthew, very famous case, state of Punjab. इसके अंदर a patient got admitted with
tertiary care. In fact, patient was post-stage cancer patient, was admitted to Dr. Jacob Matthews Hospital, was on oxygen because of the element which he may be facing at last stage, elderly patient. Oxygen got over, doctor got a call, he rushed to next room, brought another oxygen cylinder. Now was tight. While opening it has taken a minute or two. So there was a gap of 3 to 4 minutes, provide oxygen. And during that period, the patient died. Police case has been registered against the doctor. Doctor was booked under 304A of IPC, causing a death without intention with negligent act. 2 years punishment. And doctor has gone for the questioning of this case. The matter reached up to Honorable. And this was the opportunity which every doctor has got, where the criminal liability can be interpreted. And in this judgment, one of the beautiful interpretation done by the Honorable Supreme Court, where they first time demarcated 304A for occupational negligence, that is a driver, and 304A for doctor, that is a professional negligence. क्योंकि ड्राइवर के ऊपर भी सेम सेक्शन लगता है, जैसे आपने सुना है सलमान खान 7 आदमी एक्सपायर हो गए तो भी गॉट अ बेल, फर्स्ट बुक्ड अंडर 304A, लेटर बट कन्वर्टेड टू 304, और प्रोफेशनल नेग्लिजेंस डन बाय द डॉक्टर. एंड कोर्ट ने ये देखा कि डॉक्टर आर रिक्वायर्ड इन कम्युनिटी, नो डॉक्टर इंटेंशनली कॉज द डेथ. कोर्ट ने ये भी देखा कि अगर डॉक्टर ऑलवेज रिमेन इन अ फियर ऑफ लॉ, ही कैन नॉट गिव अ जस्टिस टू पेशेंट. इन इमरजेंसी प्रॉब्ली डॉक्टर डरेगा इमरजेंसी ड्रग देने के लिए, हार्ट अटैक पेशेंट, डॉक्टर डरेगा सर्जरी करने के वक्त, with a trembling hand he cannot do a proper surgery. So fear of law is always going to be a problem to the doctor. So such a fear need to be removed from the mind of a doctor. So beautifully thought by these benches, triple judge bench. Triple judge means it is a higher bench. They have demarcated 304A, and उन्होंने बोला कि to fasten a criminal liability against the doctor, negligence must be gross. Word use किया है gross. So simple medical negligence cannot be a ground to book a doctor in criminal liability. आज की तारीख में मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप देखोगे तो इजीली आप दिमाग कर पाओगे कि ये क्रॉस है कि नहीं है. क्रॉस का मतलब इट कैन बी सीन फ्रॉम द आईज. आपने मॉप अंदर छोड़ दिया, अब्डोमेन में सर्जरी के टाइम पे इंफेक्शन हुआ, सेप्टिसीमिया का डेथ हुआ, कैन बी सेड टू बी अ क्रॉस. राइट की जगह लेफ्ट एब्यूट कर दिया, कैन बी सेड टू बी अ क्रॉस. राइट फिंगर की जगह मिडिल फिंगर आपने कर दिया, या इंडेक्स फिंगर की जगह मिडिल फिंगर कर दिया, इट इज अ क्रॉस. क्रॉस which can be seen with the eye. Court has not only demarcated 304A, but also in elaborate way interpreted criminal law against the doctor. और फाइनल कंक्लूजन में यही बोला उन्होंने. उनके इंटरप्रिटेशन एंड रीजनिंग वाज सो ब्यूटीफुल, यू कैन साइट एवरीवेयर. का एक बहुत अच्छा एक टू लाइनर which I really got impressed because that was a game changing for medical practice. उनका टू लाइनर इंटरप्रिटेशन था कि मेडिकल साइंस itself is complex science, and human body itself is a complex machine. Hence, medical accident, even in the form of death, doctor must not be criminally held liable unless due care has not been given. कहने का मतलब क्या था कि डॉक्टरों को डेथ में भी क्रिमिनल केस नहीं लगता अगर उसने प्रॉपर केयर दिया है. कॉम्प्लिकेशन में भी क्रिमिनल केस नहीं लगता अगर उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया है.